Yes, our next topic is magnetic field due to straight current carrying conductor. Due to suppose we have a conductor of radius r. This is the axis of conductor of radius capital R. Small r we will take for the radius of source to the point, distance of source to the point, and here we have taken radius as small capital R. Here we have to calculate the magnetic field at 2 points. First, inside the conductor, we have to take an imperial loop of radius less than small capital R. Because inside the loop के लिए हमें कौन सा लेना होगा, हमें एक imperial loop इसके अंदर assume करना होगा. तो सबसे पहले consider current carrying conductor of radius r. We have current carrying conductor radius r, and to find the magnetic field inside the conductor, we have to assume let an imperial loop of radius small r, and small r is less than capital R. We should take on small r is less than capital R. Now, according to Ampere's law, closed integration of B dl should equal to mu naught current passing through loop. We have to take on according to Ampere's law. Ampere's is suggests that this current should be which is passing through loop. जितनी करंट लूप में से पास हो रही है वो करंट एम्पियर लूप में कंसीडर की जाती है. उससे मतलब नहीं है कि वो करंट वापस आ रही थी जैसे हमने टॉरॉइड में किया था, लेकिन इसमें हमें कौन सी करंट देखनी है कि कितनी लूप के अंदर से आ रही है, वो करंट कंसीडर करते हैं. एज टोटल करंट जो हमने अज्यूम की है कैरिंग करंट, कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर करंट I. ठीक है, टोटल करंट हमने I कंसीडर की है, बट एज वी हैव टेकन the smaller radius of the conductor, then definitely there will be current will be less. Suppose we have a conductor of this side and we have taken imperial loop inside this, it will be decrease. Then total current which is passing through this cross section area will decrease. जो करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही थी वो तो इससे नहीं होने वाली, इससे कम होगी. कितनी होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे. मीन्स हम पहले यहाँ क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं I डैश. अब I डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, द करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल I. देन करंट पासिंग थ्रू इनर, अंदर जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से हम निकालेंगे I डैश की वैल्यू. करंट passing through conductor, or I will write here cross section area what we have, cross section area pi r square. As we have the radius is r, pi r square.
is passing through this cross section area. Now the cross section area will decrease. Therefore, current passing through Amperian loop. This is through total conductor. Now Amperian loop, it will be decreased cross, it has decreased cross section area or cross section area pi r square. As we have taken the radius of Amperian loop r, the cross section area will be this, and it will be 1 upon, or I will write here in the next line, this is I dash, and what I dash? I dash should equal to I upon pi r square into pi r square. This should be current passing through small cross section area. Then pi cancel out, and I dash is equal to I small r square upon capital R square. We have I dash is equal to I small r square upon capital R square. We have the current, total current passing through loop is I small r square capital R square. As this value is greater than R, capital R is greater than small r, definitely R dash will less than capital I. What? I dash will less than capital I means जो टोटल करंट है उससे एम्पीरियल लूप से जो करंट पास हो रही है वो कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर टर्म बड़ी है. इसका मतलब छोटे लेस देन 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आई को डिक्रीज कर देगा और आपके पास जो आई डैश आएगी वो कम आएगी. एम्पीरियल लूप से जो करंट पास होगी वो लेस करंट पास होगी. तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है आई के डैश के लिए, हम वहां पर आई डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं. Then we have close integration of B dl is equal to mu naught. What we have? I dash. In place of I dash, I will write here I small r square upon capital R square. And here B remains constant throughout the Amperian loop. As there is a symmetry, Amperian loop के जितने पास में B की constant value होगी, close integration dl is equal to mu naught I close integration of dl. It will give close integration of dl. This is the line integral. इसके थ्रू हम देखेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर नहीं, ये है लाइन इंटीग्रल. b इसके अलोंग देख रहे हैं ना, तो हम देखेंगे b 2 पाई r is equal to mu naught I r square upon r square. Here we have line integral. This is the Amperian loop. करंट देखने के लिए हमने क्या करा था, क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट जाएगी एम्पीरियन लूप के, वो चेक किया था. दिस इज स्मॉल आर रेडियस का एम्पीरियन लूप है. गॉट इट. अब यहाँ ये जो बी के लिए लेंथ देखेंगे तो बी के लिए लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर. पेरीमीटर, पेरीमीटर देखेंगे तो 2 पाई आर से अब आपका क्या कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई upon 2 pi r square. Means here inside the conductor within the radius B is directly proportional to r. This we have to find out. We have to find out the distance magnetic field inside the conductor, how it is depend on the distance from the axis of conductor. Means it is directly proportional to the axis of conductor. Now second term we will find outside the conductor. Second, for outside the conductor we have assumed Amperian loop. Amperian loop of radius small r, and it should be greater than capital R. According to Ampere's law, again we have close integration of B dl.
should equal to mu naught total current passing through conductor. Passing through loop, and loop should be at the outside of the conductor. Suppose now R is this. अब R हमने ये ले लिया क्योंकि हमें आउटसाइड लेना है, और आउटसाइड द कंडक्टर हम फिर से एक क्लोज लूप एज्यूम करते हैं. दिस इज द क्लोज लूप हमने एज्यूम किया है. आउटसाइड द कंडक्टर है. आउटसाइड द कंडक्टर अगर लूप लेते हैं तो टोटल करंट जो पूरे कंडक्टर से जा रही है वही इस लूप से जाएगी. तो हमें क्या लिखना होगा? VTL is equal to mu naught the total current which is passing through conductor also passing through the inside the loop of amperial loop, means I. Then we will write here B outside the integration DL mu naught I and B 2 pi R is equal to mu naught I. Then we have B is equal to mu naught upon 2 pi I upon R, means here we have B is inversely proportional to R. Therefore it is clear inside the B magnetic field B is directly proportional to R, and outside the conductor the B magnetic field is inversely proportional to R. So we can show this with the help of graph also. Suppose it's the magnetic field axis and it's the axis for distance is the B. Here we have assumed all the lines from the axis of the conductor, and when we move from the axis of conductor to the distance small r is equal to capital R, then magnetic field gradually increase. जब से हम एक्सिस से सरफेस तक आएंगे यानी कि रेडियस तक आएंगे इंक्रीज होगा, और उसके बाद सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आर बढ़ाने पर डिक्रीज होगी. दिस इज द एट द सेंटर surface point and it has the maximum value. Maximum value of B is at the surface, and inside the conductor it will increase on increasing the R, and further if we increase the value of R the magnetic field B will gradually decrease. This is the graph showing the variation of B with respect to distance from the center of axis of conductor. This is all about magnetic field due to a conductor inside and outside the conductor.